So today is Nifty 50 expiry, and I means today and tomorrow, we are having the Fed. This It's yesterday also, like we are having the Fed part, and talking about the Nifty 50 today. Then it is open at 25,487, and high was 25,611, and low was 25,390. So please type in yes if my voice is audible to you all and screen is visible. Thank you so much for the confirmation. Just give me a minute. I'll just reshare the screen. Yes. So I'm having with me Mr. Himang and Mr. Karan Pai, who will be the speaker for the day and who will be explaining you about the Nifty 50 outlook and the expiry with the followed by the support and resistance. So means our analyst has published the report today in the morning about the Nifty 50 expiry and for the coming week expiry also. So with this, I'll hand over the session to Mr. Himang. Himang, all over to you. Yeah, thanks, Rohit. Good afternoon, all. So let us begin with this weekly expiry report. So this is basically Nifty weekly expiry report, wherein we cover up the data with respect to the Nifty, what has happened in the last expiry, from last expiry till yesterday, and what is expected in the next week. So for that, we give the strategy based on the data points that are there and a couple of other parameters. So yes, overall, in this section, if we see, we have just covered up the Nifty and Bank Nifty. So on week basis, so whatever change that has been taken place in Nifty, like what has been the change in cash market, what is the change in futures market, what is the stand of open interest, then what has been the daily historical volatility, implied volatility, and what does the overall thing mean? Okay, so like for example, today it is written that Nifty has seen a decrease in open interest and of almost 6%, and increase in price indicating a short covering. So this is the inference that we give. Same is goes with the Bank Nifty also. Those data points are also the same. And in this we so from last expiry to today, to till yesterday, sorry, what have been the position in the Bank Nifty? That is what we have showed and discussed over here. Coming to that, so after this, we have put in up the open interest distribution of Nifty. Okay, so this chart basically shows us the open interest distribution of since today is the Nifty expiry, so we have kept the open interest chart of today's expiry. Okay, so the idea behind putting this is that firstly that the reader can understand that what is the maximum and minimum range, what is the probable range in which the market can move. That's what we discuss over here. What are the areas of resistance and what are the areas of support? Okay, so from as per the options data till yesterday, if we see 25,500, 25,600 are the areas wherein Nifty can face resistance. So even if we just can check today, so market moved up and around 25,600 area. From that only market Nifty had made that high of 25,600. From then again it just came down. So this is just a simple example of how these numbers can be used. We see 25,300 as an important has a high open interest concentration, followed by 25,200 and 25,100. So this is the basically the statistics that we published from the option chain. Okay. Now along with that, we have also taken the at the money options data. So so from that we will able to understand what can be the probable range for the Nifty. Same way, same data all with respect to Bank Nifty are also displayed over here. So for the next expiry, what does it suggest? Where is the high open interest concentration and what is the range like for the Bank Nifty.
So here also like high open interest on the call side, high open interest on the put side are mentioned, and that's the detail about this. And the second part, sorry, is with respect to the Nifty volatility, which basically we show that with respect to the market movement, I mean the spot movement, how the volatility has how volatility was placed rather. Okay, so generally it just gives us a view that average volatility है या कुछ ज़्यादा higher volatility, higher ज़्यादा if the volatility is on the higher side तो हमें समझ में आता है कि हाँ भाई ज़्यादा wider movement आ सकती है, या जैसे कि Fed का जो कल का expectation था, so we can just see over here कि this there are three types of volatility, IV call, put and implied volatility in C. So यहाँ पे हमने क्लियरली देखा था कि IVs were on the higher side yesterday, तो एक इंडिकेशन था कि आज के दिन के लिए हमको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में थोड़ा सा वॉलेटाइल या हायर मैग्नीट्यूड वाला मूव देखने मिल सकता है. सो दिस इज द वे बेसिकली एक इन्फ्लुएंस ले सकते हैं हम कि भाई क्या लग रहा है आज का एक्सपायरी के लिए और क्या हो सकता है. और जो लास्ट पोर्शन है वो है स्ट्रेटेजी का. सो व्हाट वी हैव गिवन हियर इज मॉडरेटली बुलिश स्ट्रेटेजी. ओके, जहाँ पे हमने 25,400 का कॉल बाय किया है, 190 और 210 के रेंज में रिकमेंड किया है, और 25,700 का कॉल बेचने के लिए बोला है 75 से 85. तो उसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, टोटल रिस्क और रिवॉर्ड क्या है, वो उसकी डिटेल देते हैं, एंड उसका जो पे ऑफ है वो हमने राइट साइड पे दिखाया हुआ है. So that's with respect to the report. Now we'll just have a look at the technical aspect कि टेक्निकली निफ्टी कैसे लग रहा है और उसमें हम क्या देख सकते हैं. So just a moment, I'll just pass on to Rohit. Rohit, can you just help me with the? I'll just share this. So Karan, now you can, share your screen and you can showcase about the technical charts followed by the. Yes. Just give us a second while we share our screen. Yeah. So here is a Nifty 50 chart. So हेमांग भाई एक बार आप बता दीजिए कि चार्ट देखकर आपको क्या लग रहा है. Where are the probable supports? Where are the probable resistances? Yeah, thanks Karan for the same. So यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख रहे हैं कि just a moment, I'll just adjust this whole thing. Just a moment. So यहाँ पे जैसे भी एवरी टाइम जब हम शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करते हैं तो एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस होती है जिसका हम यूज करते हैं, जिससे हम डिफाइन करने का, उसको एक एनालाइज करने का ट्राई करते हैं. सो जैसे 5 डेज, 30 डेज और 20 डेज का जो मूविंग एवरेज है, अगर उसको आप देखोगे तो वी कैन क्लियरली सी कि ठीक है निफ्टी के अंदर आज थोड़ा सा सेल ऑफ आया है, देयर इज नो डाउट इन दैट from the top, but overall trend is still intact. We are still trading above the 5-day exponential moving average as well as 13-day and 20-day. तो वो इंडिकेशन है कि ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में है. यस, अप एंड डाउन हो सकता है, बट एक सब्सटेंशियल डाउनफॉल या एक अच्छे खासे जिसको बोलते हैं कि बड़ा करेक्शन हो 5% का या 3% 5% का एक बड़ा कुछ थोड़ा सा करेक्शन आना है, तो उसके लिए एक्चुअली निफ्टी हैज टू गो एंड क्लोज बिलो दिस शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस. If they can go below the short-term moving averages and sustain below the same, then we can see. जैसे कि हमने यहाँ पे क्लियरली देखा है 25,371 या जो है, जस्ट अ मोमेंट, आई गेस अभी थोड़ा सा ज्यादा बेटर दिखेगा. या ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं इसमें क्लियरली. या राइट. सो आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि जैसे पहले भी हमने देखा था कि यहाँ पे एक अच्छा खासा सेल ऑफ आ रहा था, उसके बाद निफ्टी वाज ट्रेडिंग बिलो ऑल द एवरेजेस एंड वन डे it had around this 24 300 400 area. This was the area, the candle on which there was a breakout. उसके बाद से देखिए निफ्टी एवरेजेस के ऊपर ही रहा, एक ही दिन वहां पे नीचे गया था दोनों एवरेजेस. देखिए यहाँ पे क्लियरली दिखता है हमें कि 5 डे का जब एवरेज को ब्रीच करके क्लोज हुआ तो निफ्टी आया नीचे का लेवल पे टेस्ट किया
बट ज़्यादा सस्टेन नहीं हो पाया वहाँ से. देयर वाज डेफिनेटली अ लॉन्ग कैंडल एंड इट वाज अ बेरिश इंडिकेशन, बट निफ्टी अगेन रिवर्टेड बैक एंड इट मूव्ड अप. सो दिस काइंड ऑफ थिंग हैपेंस एंड ये थोड़ा सा विप्सा होते हैं. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप रेगुलरली इसको रीड करेंगे तो थोड़ा समझ में आ जाता है दैट यस ओवरऑल ट्रेंड इज स्टिल पॉजिटिव. और इसको थोड़ा सा और अगर आपको फिल्टर करना है तो इसके अंदर थोड़ा सा एक लॉन्ग टर्म का जो व्यू डाल सकते हैं. लॉन्ग टर्म का एक मूविंग एवरेज है 100 डेज का, वो भी डाल सकते हैं, जिससे हमको समझ में आता है कि हाँ ठीक है चलो अभी मंथ ऑन मंथ भी अगर देखेंगे तो ओवरऑल द ट्रेंड इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. तो ये देखा हमने. उसके बाद यहाँ से एक अच्छा फॉलोअप आया, निफ्टी ने अच्छा गेन बनाया और उसके बाद फ्लैट रहा. और जो फेड मीट था उसके पहले काफी अनसर्टनिटी, अनसर्टनिटी तो वोंट बी द राइट वर्ड, बट यस मार्केट वाज वाचिंग कि हाँ भाई क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, क्या देखेंगे उसके बाद रिएक्ट करेंगे. तो आज ऊपर में आया, मार्केट ऊपर खुला एंड वहां से थोड़ा सा करेक्शन हमको देखने मिला. सो ओवरऑल अगर टेक्निकली देखेंगे तो अभी भी जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो अपसाइड के लिए इंटैक्ट है. 25,200 25,000 का जो मेन सपोर्ट एरिया है, जब तक उसके ऊपर है निफ्टी तब तक ये पॉजिटिव है. क्लोज बिलो 25,200 को हम समझ सकते हैं कि एक थोड़ा सा शॉर्ट टर्म नेगेटिव ट्रेंड मार्केट में हम देख सकते हैं. Now we will look at the option chain in the Nifty. Okay, so just a moment. I'll just try to check the option chain. Yeah. यस. सो निफ्टी ऑप्शन चेन हम देखेंगे जो एनएसई पे अवेलेबल है. एनएसई इंडिया पे यू जस्ट हैव टू लॉग इन. द मोमेंट यू गो इट विल बी विजिबल. ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं. सो ये बेसिकली निफ्टी ऑप्शन चेन है जिससे हमको इंट्राडे के लिए जो भी ट्रेडिंग वगैरह बनानी है या कोई व्यू बनाना है तो कैसे बना सकते हैं उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता दूंगा. So because it's not so basically reading the option chain needs rigorous practice also, because every day it's very dynamic, it changes every day and every moment. So इसके लिए थोड़ा सा इसका अभ्यास करेंगे तो slowly steadily उसकी थोड़ी सी पकड़ बनेगी and then you can trade in the right direction. हालांकि option chain is not the only parameter, you need to add up more parameters to it, right from the current market का scenario, sentiment कैसे है, international sentiments कैसे है, and वो सब का एक मिला जुला के एक स्ट्रेटजी बनती है. ओके, सो यस करंटली अगर इसके अंदर हम देखेंगे तो सबसे बेसिक तरीका जो है जिसमें हम लोग ओपन इंटरेस्ट को ट्रैक करते हैं जो होता है कि जहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉन्सेंट्रेशन होगा उसके ऊपर या उसके नीचे मार्केट जब जाता है तो एक अच्छा खासा मूव देता है. सो फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे करंटली तो यहाँ पे 25,500 के ऊपर 25,500 की कॉल में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉन्सेंट्रेशन है और 25,600 पे सेकंड हाईएस्ट है. तो ये दो एरिया है जहाँ पे वो सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस जोन है. तो जब तक निफ्टी ये 25,500 के ऊपर सस्टेन नहीं होता तब तक अपसाइड की जगह थोड़ी कम है. हाँ, ये हो सकता है कि वहां पर आके शायद रुक जाए या वहां से रिवर्स भी आ सकता है, बट ये एरिया जो है उसको हमको पकड़ के चलना होगा कि अगर हमको तेजी का बायस बनाया है और हमको तेजी करनी है तो ये एक हमको इंडिकेटर है जो हेल्प करेगा कि भाई चलो समझो 25,500 के ऊपर निफ्टी जा रही है तो समझ में आ रहा है कि हाँ ये थोड़ा सस्टेन भी हो रहा है. देन वी कैन उसके अंदर कोई तेजी वगैरह करनी है तो 25,400 450 या 500 का कॉल लेके हम काम कर सकते हैं. सेमली अगर हम पुट में देखें तो पुट के अंदर आज 25,400 के अंदर काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है. सो दिस इज पुट. सो बेसिकली कॉल साइड पे जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होता है वो रेजिस्टेंस होता है, पुट साइड पे जो होता है वो सपोर्ट होता है. ठीक है, तो ये पुट पे अगर हम देखें तो टेम्पररली आज के दिन के लिए 25,400 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है तो ये अभी इमीडिएट सपोर्ट के लिए काम कर सकता है. तो निफ्टी अगर कल स्विंग आता है ऊपर नीचे का तो समझिए कि इस लेवल के आसपास आता है तो हम ये इस 25,400 का बेस को एक स्टॉप लॉस या एक मान के है और वहां से जब थोड़ा सा बाउंस बैक का एक एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं. सो इस प्रकार से हम एक ट्रेडिंग रेंज इसके निफ्टी में से ऑप्शन चेन से हम पता कर सकते हैं. बाकी और बहुत सारे डेटा दिए हुए हैं जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, वॉल्यूम्स है, आईवीज है,
और जो भी चेंज हुआ है, क्वांटिटी है, बिड आस्क का, ये सब डिटेल दिया हुआ है। तो हर एक चीज का अपना अपना महत्व है। तो हर एक चीज को अगर आप धीरे धीरे करके स्टडी करेंगे तो ये आपके लिए काफी एडवांटेजेस है। तो एक चीज जो हमने बता दिया आपको कि भाई जो मेजर आज का ट्रेंड है वो किस तरफ है, और उस ट्रेंड को हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। ठीक है, तो उस हिसाब से हम अपना जो ट्रेडिंग सेटअप है वो भी उस हिसाब से अपन बिठाएं कि हाँ भाई मान के चलिए अभी समझो कि निफ्टी जो भी निफ्टी चल रहा है ऑलमोस्ट 25,437, तो हमको समझ में आया कि भाई अपसाइड का जगह नहीं है, डाउन साइड 25,400 का जो पुट है जहाँ पे हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है, तो हम उसका जो पुट है उसके अंदर कुछ बाई करके या चल सकते हैं, क्योंकि 25,400 का पुट पे जहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम सपोर्ट मान के चले। तो क्योंकि लोअर एंड पे चल रहा है अभी निफ्टी, तो बाइंग का थोड़ा सा इंडिकेशन, बाइंग का रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा फेवरेबल है। तो अभी हम सब जो मान के चलते हैं 23-24 रुपए में 25,400 का जो पुट है उसको हम लेके काम कर सकते हैं। सो ये एक तरीका है इसको एनालाइज करने का, यूज करने का, निफ्टी का जो ऑप्शन चेन का डेटा है। इसके अलावा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी होता है। तो बेसिकली दिस इज द नंबर कि कल से आज का इंडेक्स में कितना चेंज आया है, कल के जो आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट थे उसके सामने आज कितना ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है। तो ये एक हमें आइडिया देता है कि कितना मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज हैज हैपेंड इन that particular strike price vis-a-vis yesterday's outstanding open interest, yes outstanding position। तो उससे एक और हमें एक इंसाइट ज्यादा मिलता है कि भाई अगर इस लेवल पे जैसे मान के चलिए यहाँ पे ही देखते हैं 25,400 पे 6,10,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा था, और जिसमें से 4,00,000 ऑलमोस्ट 90,000 आज के ही चेंज हुआ है। तो हमें समझ में आता है कि बहुत मेजर पोजीशन है जो आज ही बनी है। तो ये एक थोड़ा सा सपोर्ट लेवल है जिसको काफी कुछ मार्केट इसको डिफेंड कर सकता है। तो उस प्रकार से इसके अंदर हम ट्रेड कर सकते हैं। सेम वे पुट, जैसे पुट का दिख रहा है वैसे हम कॉल का भी देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे देखिए आज 10,22,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है अभी, तो उसमें से ऑलमोस्ट 7.5 लाख आज का हुआ है। तो इसके अंदर आज काफी एक्टिविटी हुई है 25,500। तो जैसे कि हम देख रहे थे ये एक रेजिस्टेंस का जोन है जिसको निफ्टी को ब्रीच करना आसान नहीं होगा। तो ये छोटे छोटे 2-3 पॉइंट्स है बट दे आर वेरी इफेक्टिव। उसको डे टू डे आप उसको यूज करेंगे, उसको जितना ज्यादा समझेंगे उतना ज्यादा आपके लिए ट्रेडिंग के लिए तो बेटर पड़ता है। एक आपको अंदाज रहता है कि हम ब्लाइंडली नहीं खेल रहे बेसिकली, कि भाई चलो मान के कि निफ्टी 25,500 पे आता है सपोजिटली, तो एक हमें पता है कि भाई इसके ऊपर जाएगा तो ही तेजी का सौदा हमारे लिए फायदे कारक होता है। अगर उसके वहां से देर आर चांसेस कि वो नीचे आ सकता है। तो वेदर हम लोग पुट में बाइंग करें या ना करें, या उस लेवल पे स्टॉप लॉस से सेल करें या ना करें, वो सेकेंडरी है। बट एटलीस्ट तेजी नहीं करना है। अगर हम तेजी का मतलब जैसे बोलते हैं कि तेजी का एक मोड बना के बैठे हैं, तो एटलीस्ट हमको ये पता है कि इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन होता है निफ्टी तो ही हमें करना है, वरना नहीं करना है। सेम वे पुट में भी है, जैसे हमने देखा 25,400 के नीचे अगर जाता है जो उसका मेन सपोर्ट जोन दिख रहा है, तो ही हमको मंदी की तरफ जाना है, वरना मंदी की तरफ जाना थोड़ा हमारे लिए एडवांटेजेस नहीं होगा। राइट। सो ये बेसिकली 2 तरीके हैं जिसके अंदर आप इजीली उसको मतलब एक एस्टिमेट कर सकते हो कि निफ्टी का ट्रेंड इंट्राडे के लिए, या चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, या कोई भी कोई भी इंडेक्स हो, तो उसके लिए ये थोड़ा सा एक आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो yeah, so this is there, this data also gets refreshed। I mean यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो there is a option, कहाँ गया, yeah here it is। तो रेगुलर आपको डेटा अपडेटेड भी मिलेगा, तो वो भी कोई इतना ये नहीं, ऑलमोस्ट 2 या 3 मिनट्स का थोड़ा सा डिले होता है, बट दैट इज फाइन, दैट इज नॉट दिस थिंग। तो उस प्रकार से हम लोग काम कर सकते हैं। सो दैट इज देयर for this Nifty option chain। So apart from that, if there are any question here, kindly put it in the chat box। So if there are any queries, you can just put it in the chat box। Meanwhile, I'll ask Karan to showcase the top this Nifty 50 movers actually in the Bloomberg actually, followed by the stocks। Yep. या सो थैंक यू हेमांग भाई, आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया एज टू व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट।
एंड जैसे उन्होंने एक बात बोली आपको कि यू शुड हैव मल्टीपल पैरामीटर्स, जो मैंने कल के वेबिनार में भी आपको एक एक्सप्लेन किया था। जब भी आप खाना खाते हो, आपको दाल चावल सब्जी सब चाहिए होता है, सो यू रिक्वायर मल्टीपल थिंग्स टू कंफर्म योर बायस और योर एनालिसिस। सो वो चीज़ को ध्यान में रख के आपको ट्रेडिंग में आगे बढ़ना है। So now what we'll do is we'll go and take a look at what are the stocks that are moving higher for the day, what are the stocks that are moving lower for the day, and then हम लोग एक सेक्टर पर भी एक brief एक बार देख लेंगे. So for the day, something like NTPC, Bharti Airtel, they seem to be very strong. Basically, एक एफएमसी, अगर आप सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो एफएमसीजी पैक में थोड़ी तेजी ये टाइम पर दिखाई दे रही है. एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव योर प्राइवेट बैंक्स, यू हैव योर निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो एंड फाइनेंशियल सर्विसेज दैट आर मूविंग हायर. एंड लेगार्ड्स में अगर देखें, मेजर लेगार्ड फॉर द डे इज मीडिया फॉलोड बाय रियल्टी मेटल. रियल्टी मेटल का एक टसल चल रहा है टू बी ऑन द सेकंड पोजीशन. But nonetheless, overall, something like media, realty, metal, they seem to be a bit hammered. And उसके साथ साथ PSU Bank also, they also seem to be a bit hammered as of now. Then कैंडल पैटर्न में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने ऑब्जर्व की थी एक्चुअली, दैट इज, अगर आपने हमारे कल के सेशन भी अगर अटेंड किए होंगे तो पिछले 2 या 3 या मैं तो बोलूँगा पिछले 5 सेशंस में वोलेटिलिटी जो है थोड़ी कम हुई है. आज का कैंडल का क्लोज वी हैव टू वेट, बट अगर पिछले 4 सेशंस में मैं देखूं, अहेड ऑफ द फेड पॉलिसी देयर हैज बीन अ शार्प डिक्लाइन और फॉल इन द वोलेटिलिटी. अगर ये चार्ट पर आप क्लियरली देख सकते हो कि जो रियल बॉडी है दैट इज बेसिकली बीइंग कवर्ड इन द कैंडल दैट इज फॉर्म्ड ऑन द 13th of September. उसके बाद के जो कैंडल्स है जिसमें आज ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी, वी हैड अ वेरी पॉजिटिव ओपन, प्रोबेबली वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन्स टिल डेट. अगर आप देखोगे आज का ओपन जो था दैट वाज अराउंड 25,487, and the market the bulls tried to push it higher, but then the bears came in and now it is becoming a tug of war between the bulls and the bears. So kind of अभी के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो एक इंडिसाइसिवनेस बन रहा है, बट नॉनदलेस जैसे हिमांग भाई ने बोला था कि वी सीम टू बी प्लेस्ड अबव ऑल द शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस. सो 15 मिनट चार्ट पर जाकर भी अगर हम लोग देखें तो for the time being we seem to be placed below the moving averages. But again एक important चीज आपको ध्यान में रखनी है कि longer time frame पर, जहाँ these moving averages normally I use on the daily charts, longer time frame पर we seem to be still safe because we are still above the 5-day exponential moving average. So these are a few things that you need to watch out for the day. एंड जहाँ तक स्ट्रैटेजी की बात है तो वाइल एक्सप्लेनिंग अबाउट द रिपोर्ट, उन्होंने हेमंग भाई ने आपको एक स्ट्रैटेजी सजेस्ट की होगी. टू अंडरस्टैंड मोर देन यू कैन रीड द रिपोर्ट, एंड you can read the report, you can understand the report. Okay, so what can be the support and resistance for the coming week in Nifty 50? Okay, so सबसे पहले what I would like to point out is we are currently placed above the previous swing high. Correct. So previous swing high अगर आप देखोगे that is around 25,333. So I'll round it up to 25,300. And जब तक हम लोग उसके ऊपर placed है, we can expect that level to act as a support level. And as far as the upside goes, somewhere around 25,600 जो हम लोगों ने प्रीवियस वेबिनार में भी बोला था. एंड आज के दिन में भी अगर आप देखोगे तो ये जो हाई है आज का जो मार्क हुआ है, जहाँ से देयर इज अ बिट ऑफ अ प्रेशर ऑन द इंडेक्स. करेक्ट. सो वो थोड़ा क्रूशल बन जाएगा आने वाले सेशंस में. सो ब्रॉडर रेंज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इज टू बी बिटवीन 25,300 25,600 as of now. Yesterday there was an event, Fed policy थी, so उसके वजह से candle patterns, yeah, we had a positive open, then there was a sell off because it's a bit of mixed reaction to the 50 basis point rate cut by the US central bank. So
For the moment, we seem to be in a range. Candle patterns यही बोल रहा है कि अभी भी market में strong ऐसे decision नहीं है कि who is in control. It's still a tug of war basically. Anybody has any question? Anybody has any query? Then please put it in the chat box. If you have questions regarding to the candle webinars that you had attended, or about moving averages, RSI, anything. So thank you, Karan. That was beautifully explained that what is Nifty 50 is looking out for. Simultaneously, like if you can just compare the chart of the Bank Nifty and the Nifty 50 and showcase कि कल मार्केट में तेजी थी, मार्केट बैंक निफ्टी में अचानक से गिराव कैसे आया एंड क्या कैंडल फॉर्मेशंस था एंड लुकिंग एट दैट कैंडल्स कैसे वी कैन टेक द इन्फॉर्म्ड डिसीजन एक्चुअली So फॉर द इंट्राडे पार्ट या या सो सबसे पहले मैं पोजिशनली एक बार देखना चाहूंगा कि व्हाट इज द बैंक निफ्टी डूइंग. सो अगर आपको ध्यान में होगा, सो ओवर आई थिंक 2 or 3 days बैक व्हेन वी वर लुकिंग एट द सिमिलर चार्ट्स of Nifty, Bank Nifty, Fin Nifty side by side, we had observed one thing, that Bank Nifty had a bit of headroom left. Correct. And look at how the index has reacted. The banking index has reacted yesterday. It was a strong move upside, and आज के दिन में भी it tried to move higher, but as of now it is a bit flattish. एक again इसमें एक indecisive pattern हमें आते हुए दिखाई दे रहा है, but understand one thing, this might be a major reaction to the Fed policy. This basically is a major reaction to the Fed policy. So जिसके वजह से एक indecisiveness है मार्केट में, because अगर आप यूएस में भी देखोगे, it is a type. See, normally what happens is in textbook perfect scenario, ठीक है, जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं, इट इज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव फॉर समथिंग लाइक द स्टॉक मार्केट्स. सो अगेन दिस इज इन अ वेरी क्रूड लैंग्वेज में क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट द सिनेरियो ऑफ द इकोनॉमी इज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सो उस चीज को ध्यान में रखते हुए some of the participants in the US markets also took it as a sign that probably a recession is on its way, or something of that sort, which will probably turn out to be a bit negative for the US economy. So उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो एक मिक्स्ड रिएक्शन आया था हम लोग को, अगर आप यूएस इंडिसेस देखो तो, या इफ यू लुक एट अ फ्यू ऑफ द कमोडिटीज. सो वही एक रिफ्लेक्शन आज हम लोग को यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में भी दिखाई दे रहा है. So that is one of the reason you see this sharp selling tail today. But again, if I look at the charts technically, then the key red flag level for me is going to be somewhere around 52,500. And if we do manage to break below 52,500, the next level that I'm looking for would be around 51,600. And because today there was such a strong selling pressure near the highs of the day, which is around 53,300, 53,400 के पास का जो आज का हाई था, that becomes my crucial resistance level. Now bear in mind, these are all spot levels, and अगर आप if you are looking to trade in futures, you have to add the premium, या जो भी आपको adjustment करना है, that you have to do. So Hemang, we are having one question from our YouTube channel that can I buy SBI for hold or short term? So we cannot recommend that SBI buy or hold or short term. What we can do, we can take the stock using the support and resistance. We can see that okay how the stock it is. I mean for the short term or for the long term. I mean talking about like the positional trades or I mean for the long term actually. Yeah. So the levels that I'll be giving out are going to be clearly not a recommendation. ये आपको बहुत clearly समझना है. We actually don't entertain stock specific queries. But if you see, there has been a bit of sideways movement in the past couple of days after a breakdown. So for me at this point, the key level to watch out for would be the recent swing low, that is around 767, or max on the downside would be around ये जो candle का low था, which is 740 to 730 के बीच का zone. So overall, अगर आप देख सकते हो, we are still placed, I mean the stock is still placed below our short term moving averages.
अगर तो रेजिस्टेंस ऑलवेज विल बी देयर जब तक ये 21 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं जाता. So technically, just going by price action, we might see somewhere around 813, 830 to act as a bit of resistance. And on the downside, immediate support is expected to be somewhere around 760, followed by 730. Okay. Now, keep one thing in mind: no recommendations here. So these are just what the charts are telling me. It's absolutely not a recommendation. Yeah, so we are not recommending here because this is purely like education purpose, and yeah. So we are having again a query that can we say that the stock at previous buy levels? Um, so as we mentioned, we'll not be talking about whether it is at a buy level or a sell level. So no matter how you try to twist the question, we are not recommending anything stock specific. We'll just do our educational webinars. That's it. So, Karan, if we can go back and we can just showcase about the Nifty 50 RSI levels right now, that because there is a myth in the market that अभी overbought या oversold zone पे आ जाता है तो फिर कैसे देखना चाहिए. तो during for the intraday क्योंकि अभी यूरोपियन मार्केट खुलने वाला है, so how we can look the Nifty 50 actually. Yeah, so we had discussed this, in our earlier webinars also. So जब भी कोई bounded oscillator आप देखते हो, correct? So होता कैसा है कि there is a basic understanding कि एक particular level becomes an oversold level, a particular level becomes an overbought level. Correct. So जब भी RSI की अगर हम लोग बात करें तो by default something like 70-30 or 80-20, those levels are considered to be upper bounds and lower bounds. Now invariably the mistake that most of the traders they commit is they tend to consider कि anything above 80 could be overbought, or anything below 30 or 20 could be oversold. But एक चीज जो आप जो most of the people that tend to miss is अगर आप वो books में अगर आप जाओगे वापस, so you will always read this statement. You'll always come across this statement wherein they mention overbought can remain overbought for a while, oversold can remain oversold for a while. So ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि just based on the RSI positioning or the stochastics positioning आप ये determine नहीं कर सकते हो कि if it is in overbought या oversold. आपका buy and sell का decision जो है वो आप independently based on RSI नहीं ले सकते हो. It can be a added tool जो आपको बता रहा है कि momentum exhaust हो रहा है या momentum build up हो रहा है, या RSI में अगर range shift है, या आर वी हेडिंग हायर 50 के ऊपर है, रेफरेंस लाइन के ऊपर है, मल्टीपल वेज है टू एनालाइज और रीड RSI. एंड आपको मैंने पहले भी आई मीन इन आवर अर्लियर वेबिनार्स आल्सो आई हैव बीन वेरी क्लियर अबाउट दिस दैट फॉर मी पर्सनली रीडिंग समथिंग लाइक अ डाइवर्जेंस always has been helpful. Now divergence अगर आपको समझना है then go back to our previous webinars, because we are actually practically running out of time at this point. So if anybody has any query, just put it in the chat box. We'll be more than happy to help you out with that. We are here for another probably 1 minute or 2 minutes. And if you don't have any query, then we'll wind up the session. I think thank you, Karan, for giving such a great insight. Also, we have run the poll that how the Nifty 50 is looking today. So 42% said that okay, it's looking uptrend. 28% said that it is downtrend, and 28% said that it's range bound. Also, yes, I can see that there are the few people who mentioned that they are new to this option trading. So earlier we have done the session related to the options. That's a last to last week Friday. We have done the session on the options, specifically what is options, what is call, what is put, what is the margin requirement, कैसे option काम करता है if you are a seller into the market,
and thoda about strategies we have discussed it. In the previous session, that is advanced option strategies, we have covered the this multi-leg strategies actually, that is related to the straddles, strangles. So I'll paste the link in the chat box of our YouTube channel, those who are entering from our YouTube channel. So I'll share you the link. You can just take the look and you can watch the recordings of our this options sessions. Again, tomorrow we are having the session at 2:30 p.m. So do like and subscribe our channel so that, and hit the bell icon so that you can get the notification for the this tomorrow session that we are conducting at 2:30 p.m. So that we'll be covering about the some of the strategies part and how to use our mobile app, followed by with some of the popular strategies that we'll be covering in the live market, because tomorrow the market like tomorrow it is Friday. So 2:30 to 3:30 we'll just show you that from where you can access the research reports, how the research reports looks like, what is the meaning of that, I mean the reports what we are publishing it, and if the market allows and if everything goes in a perfect way, then of course like we'll be executing the strategy on that part also. So thank you, Karan, for giving such a great insight, and thank you, Himang, once again, and once again thank you all for attending today's session. Thank you so much. Thank you so much, guys.